Hello everyone. I wish you all a very happy new year and may this new year bring lot of opportunities for everyone and lead to a balanced, healthy and wealthy life. So my name is Paras Panara and I am from Spider Mumbai support team and today we are going to discuss on price action analysis with Spider. So before we begin, I would like to present one small shairi as usual for our clients. So shairi is हर नया साल आएगा और पुराना साल जाएगा निफ्टी नीचे जाकर आपको भी सताएगा और न्यू हाई बनाकर एक नई उम्मीद भी जगाएगा लोग साथ रहे ना रहे स्पाइडर जरूर साथ रहेगा और आपके लिए कुछ नया जरूर ले आएगा so let's start with the webinar. So in this webinar we'll start with the price action analysis, like what is the price action, what are the benefits of price action, and we are also going to discuss few things which are available only in Spider, so that will help you all to boost your analysis. So let's begin. So I also like to clear one thing. This webinar will be in English and in Hindi as well, so all our clients will be comfortable. Okay. So let's start with the price action analysis. So what is price action analysis? In simple layman language, it is the analysis without the indicators. Okay. हम लोग एनालाइज करते हैं सिर्फ कैंडल्स को देख के, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देख के, कैंडल्स प्राइस का चार्ट देख के, मूवमेंट कैसा है वो सब देख के हम लोग एनालिसिस करते हैं उसमें. So price action analysis is the performance of a security to predict what it might do in the future. So if your price action analysis tells you that the price is about to rise, then you might want to take a long position. अगर आपका एनालिसिस कहता है कि यहाँ से हमारा भाव बढ़ने वाला, then we will take long position from that. And similarly, if you believe that the price will fall, you might choose to short the asset. Similarly, अगर आपको लगता है कि यहाँ से कोई asset का price नीचे गिरने वाला, then we'll go for the short opportunity. So understanding price action analysis involves looking at patterns and identifying the key levels that might have an impact on your investments or trade. So price action analysis में हमको क्या करना पड़ता है, की लेवल हमको फाइंड आउट करना पड़ता है कि वहां से हमको कब रिवर्सल मिलने वाला या कौन सा एक ब्रेकआउट मिलने वाला. सो ये वेबिनार में हम लोग वही सब डिस्कस करेंगे कि रिवर्सल पैटर्न्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, ब्रेकआउट कैसे फाइंड कर सकते हैं और ये सब चीजों में हम लोग स्पाइडर के फीचर्स कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं. Okay, there are a number of different price action methods that many traders and investors use to predict the market movements and make short term or long term gains. बहुत सारे ऐसे एनालिसिस, बहुत सारी चीजें हैं प्राइस एक्शन में, लेकिन हम लोग कुछ ऐसा डिस्कस करेंगे जो आपको काफी बेनिफिशियल रहेगा. मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो काफी इजी है अंडरस्टैंडिंग में भी और एनालिसिस में भी आपको काफी हेल्पफुल रहेगा वो. ओके, सो देयर आर 4 पिलर्स ऑफ द प्राइस एक्शन एनालिसिस. एक तो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स, अनदर इज बुलिश ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड एंड फ्लैट मार्केट. सिंपल सी चीज है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स बहुत सारे बुलिश बेरिश में जो पैटर्न्स बनते हैं, लाइक ट्रायंगल पैटर्न्स, वेजिस, चैनल एटसेट्रा. बुलिश ट्रेंड हम लोग किसे कहते हैं? व्हाट इज बुलिश ट्रेंड? बुलिश ट्रेंड इज जनरली a movement of price which is basically upward movement of a particular stock. सिमिलरली बेरिश ट्रेंड हमारा क्या होता है? जो हमको लगता है कि प्राइस यहाँ से नीचे जाने वाला है, और एक ट्रेंड जिसको हम लोग चार्ट देके हम लोग पता लगा सकते हैं कि हाँ ये बेरिश ट्रेंड है, that price is going downward from this particular area. Okay, another thing is flat market. So what is flat market? It is also known as range bound or consolidation. एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसे की लेवल होते हैं दो, जो एक पर्टिकुलर लेवल्स पे प्राइस सिर्फ एक ही रेंज में चलता है. समझो एक कोई स्टॉक का रेट है 90, सो 90 से वो जा रहा है 100, सो 100 जाके रुक गया, वापस वो नीचे आ रहा है 80 पे आया, सो 80 से वापस वो 100 जा रहा है, 100 से वापस 80 आ रहा है. So ideally it is creating a range bound, it is creating a channel, or you can say it is consolidating in particular range. So it is called flat market. Ideally ये 3-4 ही बेसिक चीज है प्राइस एक्शन में. ये 4 चीजों के अंदर डिटेल्स में हम लोग आज डिस्कस करेंगे. Okay, so we are going to discuss all these things in detail. So पहले तो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स. So what are candlestick patterns?
ये पैटर्न्स कुछ ऐसे बनते हैं चार्ट्स में जिससे हम लोग को एक आइडिया मिलता, एक रिवर्सल पॉइंट्स फाइंड करने को हम लोग को पता चलता. So if you check here, we have bullish patterns, we have neutral patterns, and we have bearish patterns. Okay, so we'll discuss first with bullish one. So यहाँ पे जो patterns है, these all patterns are single candle patterns, and below that we have double candle patterns, and after that triple candle patterns. Okay, single candle patterns are very easy to understand. इसमें एक ही पैटर्न होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड हैमर पैटर्न. ओके, सो व्हाट दिस एग्जैक्टली डू, इसके पहले आपका प्राइस एक नेगेटिव रहता है. ओके, उसके बाद एक हैमर पोजीशन, हैमर बनता है वहां पर. नाउ व्हाट इज हैमर, अगर आप देखोगे तो एक नीचे लंबा सा एक विक बना हुआ. ओके, एंड उसके ऊपर एक हैमर जैसा साइज है, मतलब एक हथौड़ा बना दिया उसने वहां पर. ओके, यू कैन सी एक हैमर जैसा पोजीशन है यहाँ पर. उसके बाद आप देखोगे तो एक बुलिश ट्रेंड वापस से स्टार्ट हो रहा. ओके, सो ये एक कैंडल ये ऐसे आइडेंटिफाई करता है ना कि ये एक दिन को या जो भी टाइम फ्रेम पे हमारा पैटर्न बन रहा है, ऑन दिस पर्टिकुलर कैंडल देयर वाज फाइट बिटवीन बुल्स एंड बेयर्स. सो कुछ ऐसा फाइट था कि बुल्स ने ज्यादा पावर लगा के एक न्यू हाई बना दिया. ओके, एक नया हाई बना हुआ है, और उसके बाद जब वो हैमर का हाई ब्रेक होता, सो वहां पर हमारा एक एंट्री पॉइंट बनता. ओके, सो दिस इज द हैमर पैटर्न. सिमिलरली इन्वर्टेड हैमर है. इन्वर्टेड हैमर क्या है, हैमर ही है लेकिन वो उल्टा हैमर है. दिस हैमर इज इन्वर्टेड वन. So same thing happens here. There is a bullish trend, bearish trend, and after the inverted hammer pattern, there is the bullish trend. Okay, same चीज हो रहा है. काफी ज्यादा फाइट्स थी बुल्स एंड बेयर्स के बीच, बट फिर एक इन्वर्टेड हैमर पोजीशन के बाद जब वो इन्वर्टेड हैमर का हाई ब्रेक होता, सो वहां पर हमारा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाता. ओके, अनदर थिंग इज ड्रैगन फ्लाई डोजी. सो ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होता है, सेम चीज होता है, हैमर जैसा ही पैटर्न दिखता हो, बट जो बॉडी रहता है वो बॉडी कुछ नहीं रहता वहां पर. एक टी साइज का पैटर्न बनता है वहां पर. ओके, एक टी साइज का पैटर्न बनता है, वहां से एक डाउन ट्रेंड होता है, एक टी साइज का पैटर्न बनता है, फिर वहां से एक अप ट्रेंड का साइन रहता है. इसमें भी सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे. जब कैंडल का हाई, जब क्लोजिंग रेट प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करता, तो हमारा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जनरेट होता है वहां पर. ओके, देखिए, whenever it breaks this high, this particular candle high, it creates a buying opportunity. Okay, and another last single candle pattern is bullish spinning top. So ये आइडियली न्यूट्रल भी माना जाता है. ये एक्चुअली ऐसा होता है कि एक कैंडल बन रहा है और बीच में बॉडी है, लेकिन कुछ मूवमेंट नहीं है, ना वो ऊपर गया ना वो नीचे गया. जहां पर ओपन हुआ है क्लोज भी वहीं पर. Okay, so this is ideally a bullish spinning top. So this is also a reversal pattern, but generally people also consider it as a neutral one because there are not much fight between bulls and bears. Okay, another patterns are double candle patterns. Okay, so in double candle patterns we have bullish kicker, bullish engulfing, piercing line, bullish harami and tweezer bottom. Okay, ये सब पैटर्न्स में से जो वर्ल्ड वाइड यूज होता है वो एक है बुलिश एंगल्फिंग. ऑल्सो विद दिस बुलिश हरा में भी काफी वर्ल्ड वाइड यूज होता है. सो व्हाट एक्चुअली दिस मीन्स, एंगल्फिंग का मतलब क्या होता है, वो एंगल्फ कर देता है. दैट मीन्स जो भी हमारा पैटर्न था, आपको एक चीज मेक श्योर करना है, वी हैव टू मेक श्योर वन थिंग, दैट दिस पैटर्न शुड अपीयर एट द की लेवल्स. ओके, सो जनरली दिस पैटर्न शुड अपीयर आफ्टर द डाउन ट्रेंड. ओके, एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, वो डाउन ट्रेंड चलते चलते यहाँ पर एक बेरिश कैंडल बना, उसके बाद बुलिश कैंडल ऐसा बनना चाहिए कि वो पूरा एंगल्फ कर देता है प्रीवियस कैंडल को. इन शॉर्ट, इन लेमन लैंग्वेज अगर हम लोग बोले तो पूरा वो कैंडल को खा जाना चाहिए बस. करंट क्लोजिंग, करंट हाई प्रीवियस क्लोजिंग हाई से ऊपर होना चाहिए, और लो जो है अगर प्रीवियस लो से भी नीचे जाता है, इट डजंट मैटर, इट्स ओके, बट मेजरली क्लोजिंग शुड बी अबाउ द प्रीवियस हाई.
previous day's high or previous week's high, whichever time frame you prefer. Okay. Same thing in bullish harami, but in reversal. So what actually happens? We have downtrend here. Okay, downtrend होता है, एक बड़ा सा रेड कैंडल है यहाँ पर. Okay, we have big red candle here, but उसके बाद we also have one bullish candle. ये एक्चुअली ऐसा चीज है, आप ऐसे भी कह सकते हो बेरिश एंगल्फिंग, ऑलमोस्ट बेरिश एंगल्फिंग कह सकते हो आप इसको. ओके, सो ये सेम चीज है, बट वो चीज रिवर्स हो रहा है यहाँ पर. ओके, सो आइडियली ये क्या माना जाता है कि जब भी ये बुलिश हरामी का हाई जब ब्रेक होके ऊपर जाता. ओके, सो whenever it breaks the high of this bullish harami pattern, it is considered as a buy signal. Okay, same thing in tweezer bottom. Tweezer bottoms are also the same similar pattern with bullish engulfing, but the thing is the bullish candle is not as much powerful as bullish engulfing. Okay, ideally pattern same ही है, but उतना strong bullish candle नहीं है जितना strong bullish candle हमारा bullish engulfing में था. Okay, so these are the double candle patterns, and lastly we have triple candle patterns. These candle patterns include 3 candles or more than 3 candles. Okay, so worldwide, in this worldwide, which are used are morning star, morning doji star, also morning star, bullish abandon baby. Okay, and also 3 white soldiers. Okay, so what is morning doji star? So I'll explain this in layman terms as well. What this actually means, you see here that it is written morning doji star. मॉर्निंग का मतलब क्या होता है? सनराइज होता है. एक सिंपल सा एक टर्म बता रहा हूँ, सनराइज होता है. सनराइज मीन्स इसमें क्या कंसीडर आपको करना है? दिस कैंडल इज राइजिंग. इंस्टेड ऑफ सन इज राइजिंग, वी विल कंसीडर दिस कैंडल इज राइजिंग. ओके, सो दिस पैटर्न आइडियली अपीयर्स at the same reversal area. So what actually happens? We have one downtrend here. Okay, we have one downtrend, and after that, this morning star doji has been appeared. Okay, सो ये पैटर्न अपेयर होने के लिए पहले तो आपको एक बेरिश ट्रेंड चाहिए वहां पर, उसके बाद एक डोजी चाहिए. डोजी क्यों चाहिए? दिस डोजी कंसीडर्स दैट there is not much fight between bulls and bears, and at the very next day it breaks the doji high. Okay, and it also breaks the bearish candles high. So this is the morning doji star. सिंपल सी चीज है, कंफ्यूज हम बिल्कुल भी नहीं होंगे मॉर्निंग स्टार में और इवनिंग डोजी स्टार में. मॉर्निंग से आपको बस एक चीज ध्यान रखना है कि मॉर्निंग दैट मीन्स इट इज बुलिश. मॉर्निंग में सनराइज होता है, वैसे आपका बुलिश कैंडल राइज होगा. इवनिंग में आपका सनसेट होगा, सो सिमिलरली आपका बेरिश कैंडल वहां पर नीचे जाने वाला. सिंपल सा हम लोग लॉजिक लगाएंगे, सो नो कंफ्यूजन विल बी देयर. ओके, नेक्स्ट पैटर्न इज 3 व्हाइट सोल्जर्स. अब इसको 3 व्हाइट सोल्जर्स क्यों कहते हैं? देयर आर 3 बुलिश कैंडल्स. ओके, ये भी एक ऐसा पैटर्न होता है कि आपका एक पहले बेरिश ट्रेंड हो, उसके बाद ये 3 कैंडल्स अपीयर हो वहां पर. ओके, so it is the same thing. I'll erase few things from here. Okay, so this is the same thing. We should observe the downtrend. Okay, after that we need these 3 white soldiers here. So after these 3 white soldiers, there are many there are chances that we can also get another few bullish candles from here. Actually इसको एक trend reversal भी माना जाता. Okay, after that bullish abandon baby और morning star, ये दोनों और ये जो हमने मॉर्निंग डोजी स्टार डिस्कस किया, दिस ऑल आर सेम, ऑलमोस्ट सेम. मॉर्निंग स्टार जो आप देखोगे, मॉर्निंग स्टार और मॉर्निंग डोजी स्टार में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि जो बीच का जो कैंडल है ये डोजी कैंडल है. एंड व्हाट इज द डोजी कैंडल? डोजी कैंडल मींस दैट देयर इज द कैंडल साइज व्हिच इज way smaller, very small, but if you observe the body of the candle, the body means this area we call as body, and above that this is the wick. Okay, so if you observe the body, there is a very thin body, and also wicks are very small. So this candle is called as doji. Okay, and same thing in morning star. If you observe here,
it is not the doji candle. Okay, body size है थोड़ा बड़ा है doji से. Okay, so it is the same thing, but we have body size greater than doji, so it is called as morning star. Okay, and after that we have rising 3. So what this mean? दो bullish candle है यहाँ पर. Okay, but we need the same thing. पहले एक bearish trend होना चाहिए यहाँ पर. We need one bearish trend. After that, this is the reversal pattern which should be there. ये काफी रेयर ऑब्जर्वेशन में आता है, बट वंस इट इज ऑब्जर्व ये काफी स्ट्रॉन्ग भी होता है. एक बार बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ, उसके बाद अगर हम दोनों को ये बुलिश, हमको ये दो बुलिश कैंडल मिलते हैं, सो इसके बाद आइडियली क्या होता है, देयर आर 3 कैंडल्स. सो दिस 3 कैंडल्स यू कैन आल्सो यूजुअली से दैट दिस 3 कैंडल्स आर द इनसाइड बार. ओके, नाउ व्हाट इज द लॉजिक ऑफ इनसाइड बार? इनसाइड बार का मतलब क्या होता है कि एक बड़ा सा कैंडल होता है. Okay, we have this big candle here, and after that we have small candles inside this big candle. Okay, inside this big candle we have these smaller candles. Okay, so this means that ये inside bar pattern है. So inside bar बनने के बाद जब वो breakout दे देता है, when it gives the breakout after the inside bar, okay, you see this is the breakout pattern. Okay, so this is ideally a very good rising 3. So ये कंप्लीट बनने के बाद इसको एक अच्छा सा बुलिश पैटर्न कंसीडर कर सकते हैं. ओके, सो दिस आर ऑल द बुलिश पैटर्न्स. वी विल आल्सो डिस्कस द न्यूट्रल पैटर्न्स. नाउ व्हाट आर न्यूट्रल पैटर्न्स? ये ऐसे पैटर्न्स है जो न्यूट्रल रहते हैं, जो आइडियली कुछ आइडेंटिफाई करते नहीं है प्रॉपर्ली. ओके, जो मारुबोजू कहते हैं इसको. मारुबोजू क्या रहता है? जिसका वीक रहता ही नहीं है. You see that this is called weak, right? So in Marubozu candle, this weak is not available. But if you observe in doji, doji में हम लोग को weaks ही मिलेंगे ज़्यादा. Body size are very thin. Okay, this body size is very thin, but we will observe the big weeks, and also the spinning top we discussed. Okay, and the harami patterns. Next we have bearish patterns. These bearish patterns are exactly the opposite of this bullish patterns. Okay, but still we will discuss this. There are also changes in name. Ideally यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हैमर लिखा था, but यहाँ पर भी है हैंगिंग मैन. Okay, कुछ changes है names में. Okay, so we'll still discuss all the patterns. So single candle pattern we have hanging man, shooting star, gravestone doji, and bearish spinning top. Okay, now why it is called hanging man? अगर आप देखोगे so एक यहाँ पर ideally hammer ही है. Okay, if you observe closely, this is the hammer only, and even if you check this here, just a minute, I'll clear all these things. Okay, so if you observe here this side hammer, okay, this is the hammer only. The same hammer has been appearing here, but we need to observe the trend. Okay, यहाँ पर trend क्या था? We had bearish trend, but here it should be bullish trend here. After the bullish trend, it should appear the hammer. So bullish trend के बाद जो hammer appear होता है, that is the reversal. So ideally it is called hanging man. Now why hanging man? If you observe the pattern closely, ऊपर body है और नीचे weak है. Ideally एक hanging man जैसा pattern, a man that is hanging. Okay, so this pattern should appear above. Okay, this pattern should appear above the bullish trend. Similarly, we have shooting star. Inverted hammer का ही opposite है, but नाम change किया है shooting star. Okay, same thing we need to check here. It should be bullish trend. After that, we need to check what pattern it is appearing. So this is called shooting star, and after that, this is the clear sign for bearish. And also we have gravestone doji. Gravestone doji क्यों कहते हैं? अगर आप just for an example, अगर आप graveyard अगर कहीं पे आपने देखा रहेगा,
So जैसे ग्रेवयार्ड रहता है पैटर्न, वैसे यहाँ पर ग्रेवस्टोन डोजीज को बोला गया. So what this exactly happens, we need to observe the same bullish trend, and after that we need to observe this pattern. Okay, so after this pattern it is the sign of reverse. Next we have double candle patterns. So double candle patterns are also the opposite of bullish double candle patterns. We have bearish engulfing, which is worldwide used. Also the dark cloud cover is worldwide used. Okay, so bearish में दो ज्यादा यूज होते हैं, बाकी ये सारे भी यूज होते हैं, बट नॉट एज मच एज bearish engulfing एंड डार्क क्लाउड कवर. जो पियर्सिंग लाइन है यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो इसी का ही ऑपोजिट है वो डार्क क्लाउड कवर. ओके, सेम चीज अप्लाई करना है. वी हैव टू अप्लाई द सेम थिंग. इट शुड बी bullish trend first, after that this pattern should appear, so that are the reversal signs for the bearish. Okay, entry points भी identify करने काफी easy है. It is very easy to identify the entry points. I'll show the exact way. In bearish engulfing, अगर आप देखो तो यहाँ पे हमको पहले एक bullish trend होना चाहिए. There should be bullish trend. After that, this pattern should appear. Bearish engulfing. So same thing. Bearish candle should be greater than previous bullish candle. Okay, and after that, once it breaks the bottom of this pattern, that is the entry point for shorting. Okay, same thing in dark cloud cover. Dark cloud cover we have upper trend. After that this pattern appears. Once it breaks the low of the pattern, that is our entry point. Okay, same thing in bearish harami and tweezer top. We have uptrend here. Okay, once it breaks the low of bearish harami and tweezer top, it is the sign for short entry. Okay, and last but not the least, we have triple candle patterns. Same thing we are seeing here. We had observed rising 3, so we have here falling 3. Same logic apply hoga. Once it breaks the low of this candle, once it breaks the support, it is ideally called the support. So once it breaks the support, we'll go for the short entry. Okay, same thing in 3 black crows. 3 black crows तो एक continuation ही है trend का. So once it breaks the low of the last candle, we can go for the short entry. Okay, and even in evening doji star. Evening doji star will consider once it breaks the low of this bearish candle. Okay, so once it breaks the low of this bearish candle, we'll go for the short entry. So this is bearish abandon baby and evening star. ओके, सेम पैटर्न्स है. जो सेम यहाँ पर हम लोग को बुलिश कैंडल्स मिले थे, वो सेम यहाँ पर हम लोग को इवनिंग स्टार है और इवनिंग डोजी स्टार है. ओके, वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व ऑल दिस पैटर्न्स इन अवर स्पाइडर सॉफ्टवेयर एज वेल. सो लेट्स चेक दिस पैटर्न्स इन स्पाइडर सॉफ्टवेयर एंड वी कैन ऑल्सो स्कैन द रिजल्ट्स अकॉर्डिंगली. ओके, so you'll go in our software. Now, how to add these candlestick patterns? There is one shortcut which is Control C, Control plus C, C for candle patterns. Okay, so once you press Control C, this window will appear. So we have all the patterns you need to check in your charts. Okay, जो मेजरली यूज होते हैं वो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टिक करके रखे. हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, एंगल्फिंग लाइन बेयर. ओके, patterns which are mostly used, I already clicked on those patterns. Okay, so after selecting your patterns, you just need to click on OK. So once you click on OK, you can see these boxes are appearing. Okay, I'll zoom in a little bit. Okay, so these boxes have been appearing. So if I place my cursor here, you can see on the left bottom it is written evening doji star. Okay, it is written on this side. I'll show again. It is written evening doji star.
सेम पैटर्न है जैसे हमने डिस्कस किया था। एक यहाँ पर एक क्लियर एक अप ट्रेंड आ रहा है। आफ्टर द अप ट्रेंड यू कैन ऑब्जर्व दिस द इवनिंग डोजी स्टार। ओके, वंस इट ब्रेक्स द लो, ओके, जैसे यहाँ पर हमारा लो ब्रेक होता था, निफ्टी के लिए काफी अच्छा सा शॉर्ट करने के लिए चांसेस थे। ऑब्वियसली इन ऑप्शंस एंड डेरिवेटिव्स काफी अच्छा हमको यहाँ पर साइन मिल गया। ओके, सो आई विल रिपीट अगेन, दिस पैटर्न शुड अपीयर ओनली ऑन रिवर्सल एरियाज, की लेवल एरियाज। की लेवल एरियाज क्या होता है? जो एक टॉप पर आता है या तो एक बॉटम पे आता है। सो आइडियली अगर आप देखोगे तो ये टॉप पर ये पैटर्न हमको देखने मिला था। सेम थिंग यहाँ पर भी देखने मिला। यहाँ पर हमको एंगल्फिंग लाइन बेयर देखने मिला। एक अप ट्रेंड आया था निफ्टी पे छोटा सा, उसके बाद ये एंगल्फिंग लाइन आने के बाद आप देखोगे तो काफी क्लियर डाउन ट्रेंड है। ओके, बीच में भी काफी बॉक्सेस है, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे वन बॉक्स हैज बीन अपीयर्ड हियर, बट देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ दिस बॉक्स। व्हाई? बिकॉज ये ट्रेंड के अंदर आ रहा है। ट्रेंड के अंदर जो बॉक्सेस आते हैं ना, उसके कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। ट्रेंड को रिवर्स करने वाले हमको बॉक्सेस देखना है। ओके, सो इफ यू प्रेस कंट्रोल सी अगेन, इट विल डिसअपियर। इसको ऐड करने के लिए मैं वापस कंट्रोल सी प्रेस करूंगा, और अगर वापस कंट्रोल सी करूंगा तो वहां से डिसअपियर हो जाएगा। ओके, I have one query for the candlestick patterns. You can also make query on your own as well. I'll show how to make it. We'll just go to query, and after that we'll go to technical query. Okay, so once you go on technical query, you can add your candlestick conditions here. मैंने कुछ ये conditions already add करके रखे हुए। What I did, मैंने यहाँ पर एक पैटर्न ऐड किया, और उसके पहले मैंने एक रेड बॉडी फॉर लास्ट 10 बार्स 3 ऐड किया हुआ। सिमिलरली मैंने बेरिश के लिए उसका उल्टा ऐड किया हुआ। So to add these candlestick patterns, you just have to click on condition. After clicking on condition, press C. C for candlestick patterns. So once you press C, you can see that candlestick patterns is appearing here. So click on candlestick patterns, go to condition, and in this condition select CP in last 10 bars. So इसका मतलब क्या होता है? इन लास्ट नंबर ऑफ बार्स में जहां पर एक पैटर्न आ रहा है वो हम लोग को दिखेगा। And in patterns, you can select whichever patterns you want. After selecting, you can click on add. Okay, so it will appear here. So मैंने कुछ ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ है, मैं इसको रन करता हूँ। ओके, सो ये कुछ पैटर्न आया। अब ये ICIL पे मुझे बेरिश पैटर्न पर ही आया होगा। सो ये एंगल्फिंग लाइन बेयर का पैटर्न है। अगर आप देखोगे, वी हैव वन बुलिश ट्रेंड हियर, एंड आफ्टर दैट वी हैव एंगल्फिंग लाइन बेयर पैटर्न। ओके, सो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि मंडे को ये रिवर्सल हो सकता है अकॉर्डिंग टू कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, PNB हाउसिंग में भी हमको बुलिश पैटर्न में ही आया होगा। सो दिस इज द एंगल्फिंग लाइन बुल, काफी अच्छे पॉइंट पे आया। इफ यू चेक, इट इज द बेरिश ट्रेंड, and after that we have got this pattern. So there are very high chances that it can be bullish from Monday. So हमारा key level क्या होगा? Whenever it breaks high of this pattern. Okay, so high, it has created the high of 498, 499 का high बना है। So once it breaks the high and sustains above it, so काफी अच्छा साइन होगा। Okay, एक सपोर्ट भी है यहाँ पर, की सपोर्ट है काफी अच्छा सा। यही कैंडल का सपोर्ट यहाँ पर वापस से आ रहा है, और एक अच्छा सा रिवर्सल पैटर्न भी है। Okay, so this is how you can observe candlestick patterns on chart. We'll also share this query with you. Query बनाना तो मैंने आपको सिखा दिया, ये query कैसे बनाना। But just in case if you are facing any difficulties, as usual, you can contact us, or else we will directly share this query with you. Okay, so we'll move further. So this was all about the candlestick patterns. Next is bullish trend, bearish trend, and flat market. Okay, so न्यूट्रल फेज, ये मैंने यहाँ पे निफ्टी का ही चार्ट है यहाँ पर। ओके, निफ्टी का ही चार्ट है। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल फेज, जहां पर प्राइस कुछ मूवमेंट नहीं देता, एक ही रेंज में चलता।
उसके बाद when you see once it breaks the neutral phase, we observed a bullish phase here in Nifty. काफी अच्छा bullish ट्रेंड मिला, एक पर्टिकुलर चैनल के अंदर ही चल रहा है. Okay, and after that we observed one bearish phase which is we are currently observing. Okay, this is very fresh chart of Nifty. So ये तीन चीज है जो हमको ऑब्जर्वेशन में आती है. ओके, एंड दिस इज द बुलिश एंड बेरिश स्ट्रेंथ. ये कैंडल्स का स्ट्रेंथ हमको दिखाता. सो ये जो बुलिश का कैंडल है, दिस इज वेरी बुलिश, दिस आर वेरी लेस बुलिश, एंड दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल. ये न्यूट्रल पैटर्न. दिस आर वेरी लेस बेरिश एंड दिस इज वेरी हाई बेरिश. ओके, सो व्हाट दिस आइडियली सिग्निफाइंस, अगर ये ज्यादा बुलिश कैंडल है व्हिच मींस द बुल्स हैव टेकन ओवर द पर्टिकुलर कैंडल. जैसे जैसे ये वीक्स बड़े बड़े क्रिएट होते हैं वैसे वैसे उसका इफेक्टिवनेस कम होते जाता. ओके, सिमिलरली जैसे जैसे ये वीक्स कम हो जाते हैं वैसे वैसे इफेक्टिवनेस बढ़ते जाता. ओके, so for trend identification we can use tools like trend line, channel, squares and studies like swing to identify tops and bottoms. Okay, so ये टॉप बॉटम आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग स्विंग स्टडी भी यूटिलाइज कर सकते हैं. So कैसे करेंगे? We'll come back to our software again. I'll remove these patterns and I'll add swing study. So how to add study? We'll open study selection option. So we just have to click on S button, press S button, S for Singapore, and after that we'll press S again. So below that we'll see swing percentage. Okay. After that, select colors as per your requirement. I have white background, so I'll select black here. Okay, and I'll click on all time frames and click on add. Okay, so this will appear key resistance and support levels for my chart. Okay, as you can see, ये सारे मुझे ऐसे की लेवल्स बताएगा कि ऐसे कुछ लेवल्स पे आने के बाद एक रिवर्सल हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं. ओके, यू कैन ऑब्जर्व दिस इन MNM. एक ऐसा की लेवल था, ये एक ऐसा रेजिस्टेंस था जहां से वो एरिया पे आने के बाद वी ऑब्जर्व वन ग्रेट डाउनफॉल इन MNM. Okay, we can also say that there was very good supply here. Okay, and also we have observed double top here. So after the double top formation we observed one downtrend. Okay, next thing, so next are the strategies to price action analysis. One thing which is very important for price action analysis is observation. We need one clear observation of the patterns. Okay, so there are some possible patterns which we might observe. Okay, so I'll discuss those patterns. Okay, patterns like triangle, wedges, pennants, channels need pure observation, and with help of spider we can observe easily with help of tools. We have some tools, I'll discuss that. Okay, so ideally these are the patterns which we are going to observe. Okay, this is called double bottom. So ideally अगर आप देखो तो यहाँ पर एक double bottom बन रहा है. So once the double bottom has been formed, that is the sign of bullish. Okay, so ideally the key area of buying is this level. Okay, so once it breaks above the double top, this resistance level, so once it breaks this resistance level, this is the key level for buying. But if you have enough risk bearing capacity, then we can also go for the buying at this level. So once the bottom has been appeared, we'll wait for the confirmation of one or two candles, and after that we will go for buying. Okay, same thing is double top. So once the double top has been appeared, we'll go for the bearish. Okay, we'll go for short, and below that we have bullish rectangle and bearish rectangle. So simple सा चीज है, एक ऐसा लेवल है, एक ऐसा एरिया है जो रेक्टेंगल है, और यू कैन ऑल्सो कंसिडर एज द कंसोलिडेशन. ओके, वी जस्ट नीड टू ऑब्जर्व द ट्रेंड. एक ट्रेंड था, बुलिश ट्रेंड था,
After the bullish trend, we observed one consolidation and it broke the consolidation level resistance. So once it breaks the resistance, that is our buy call again. Similarly, in bearish rectangle, it should be bearish trend, then it should be a rectangle, and after that, the continuation of the bearish trend. Okay. Next, we have inverted head and shoulder and head and shoulders. Okay. So what this ideally means, एक simple logic लगाएंगे. We'll apply simple logic. We have our head and we have our two shoulders. Okay. Same thing we can observe in price action analysis. This is called the head and this is called the shoulders. Okay. So ideally this is inverted head and shoulder. Ideally the head and shoulder is this. This is the shoulder. Okay. And this is the head. Okay. So ये पैटर्न बनने के बाद हमको एक बाइंग और सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है. Now how we'll go for this opportunity? Once it breaks the support, okay, after forming the head and shoulder, once it breaks the support, that is the our key level for shorting. And similarly, once it breaks the resistance, it is our key level for the buy. Okay. After that, we have bullish pennant, bullish triangle, bearish pennant, and bearish triangle. It is the same thing. Their patterns sare same hai. These all patterns are same, but the minor difference you can observe is in bullish pennant. If you observe this area, actually एक bearish trend से start हुआ था. Okay, it started with a bearish trend and it appeared one triangle, and after that it broke the trend line. Okay, but if you observe in bullish triangle, it is the continuation of pattern. Okay, एक bullish trend था यहाँ पर, फिर एक range bound हो गया, उसके बाद ऊपर break किया उसने वापस. Okay, so this is the minor difference in bullish pennant and bullish triangle. Same thing in bearish pennant. Ideally the trend is rising. Okay, there is the rising trend, but it fell down. It started consolidation in a triangle. But in bearish triangle, it is the continuation of trend. We got one bearish trend, one range bound area, and after that continuation of bearish trend. Okay. Same thing in descending channel, ascending channel, bullish flag and bearish flag. ये सारे patterns भी same ही है. The only key difference is the starting area. Okay. This was the starting area. Ideally a rising trend था, फिर एक consolidation हुआ downward sloping में, उसके बाद एक rising वापस trend मिला. Okay. Same thing in bullish flag. Bullish flag में भी एक rising trend line था, एक consolidation हुआ, एक फिर then again we have rising pattern again. Okay. But difference क्या है इसमें? Channel लंबे होते हैं. There are high chances that channel goes very long. Okay, काफी लंबे channels बनते हैं, but bullish flag ideally the size of the flag. Okay, means this is the flag, you can consider this as a flag, and this is the pole. Okay, flags will be the smaller one, but channels can be the long one. Okay, same applies for the bearish flag and ascending channel. Lastly, we have bullish wedge and bearish wedge. ओके, वेजेस और ट्रायंगल में क्या डिफरेंस है? ये भी आपको सिमिलर दिखेंगे. ओके, दिस आर आल्सो द सिमिलर वंस, बट द डिफरेंस इज यू कैन सी दैट एक ट्रायंगल जो था, एक ट्रायंगल के ऊपर एक फ्लैट लाइन बनता. ओके, बुलिश के लिए एक फ्लैट लाइन बनता और बेरिश के लिए एक नीचे फ्लैट लाइन बनता. बट इन वेज इफ यू ऑब्जर्व बोथ लाइंस आर फॉलिंग. ओके, बुलिश ट्रेंड कैसा होता है ना कि ये एक अप ट्रेंड मिला, बट जो चैनल कंसोलिडेट हो रहा है वो एक फॉलिंग में होगा, उसके बाद एक राइजिंग ट्रेंड मिलेगा. सो दिस इज द बुलिश वेज. एंड सेम फॉर द बेरिश वेज, इट शुड बी द बेरिश, after that the consolidation area should be rising. Okay, and after that it should continue the trend. Okay, these patterns are very easy. I will also share this PPT with you all if required, because ये एक ऐसी चीज है ना कि if you are observing all these patterns with your naked eye, then there are very high chances to success your investments or trades or whatever it is. Success ratio काफी high बढ़ जाता है अगर ये observation आपका काफी clear है. Okay.
There are few examples I have noted down here. We will also discuss few examples on this. Okay. So first we have Aarti Industries. Okay, we will go to software again. I'll remove this swing study. Okay. So in Aarti Industries, if you observe, this is the channel. Okay, मैंने already पहले से ऐड करके रखा होगा. So ये channel मैंने कैसे plot किया? Okay, how I added this channel? I'll press P. Okay, after pressing P, P for Paras. Okay, so after pressing P, we have to take the high of the particular candle. Okay, so if I'm adding on this candle, I'll press H button, so it will catch the high of that candle. So okay, so this area has been locked, you can see. After that, I have to select another high area. Okay, so this is my bearish candle. So at this point, it started to move down. So this is my key resistance area. So I'll go to this candle and I'll press H again. H for high. Okay, so it will lock one trend line. After that, I'll just take the low of the particular support area. Okay, so I have observed that this is the low area of the channel. So I'll press L for low, and I'll click once more. Okay. So after adding your channel, you will get the color selection option. So just select your color and click on OK. Okay. So this is how you can add the channel. Another simple tool you can see, if you right click on chart, okay, and we have option add line tools. So all the tools are available here. Okay, trend line, channel, retracement, support, resistance, vertical line, Fibo cycle, everything is available here. Okay, so let's come back to the channel. So if you observe, ये channel यहाँ पर हमको मिला. Once the channel broke here, okay, it broke the channel. You can observe the very good trend here. Okay, कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ी, क्लियर प्राइस एक्शन अप्लाई किया हम लोगों ने. Clearly we just observed the pattern, we observed the candle, and once it broke the key support, key resistance area, we had good buy call from 962 till 1167. Okay, we'll discuss another example, that is Tata Steel. Okay, so in Tata Steel you can see that this is the triangle pattern. एक ट्रायंगल पैटर्न ऑब्जर्व हुआ टाटा स्टील में, रिसेंट पैटर्न ही है, काफी फ्रेश है. एक ट्रायंगल ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पर, ब्रेकडाउन होने के बाद एक पर्टिकुलर सपोर्ट एरिया लगा यहाँ पर. इफ यू ऑब्जर्व, दिस वाज द वेरी गुड सपोर्ट एरिया, जो एग्जैक्टली सपोर्ट पे आने के बाद वापस से राइज हुआ था. Okay, so I have added trend line here. So same thing, to add the trend line, you have to press T for trend line, and select the key high levels, and after that select the key low levels. Okay, next example we have Bajaj Auto. Okay, so in this Bajaj Auto, we observed the double top. Okay, and this is the top and this is the another top. Ideally you can also call this the supply area. Okay, after this double top you can observe the downtrend. वापिस ऊपर आया, लेकिन वापिस वो सप्लाई एरिया पे आने के बाद वापिस से नीचे गया. Okay, after that I had observed one key support area. So after coming from that key support area, it started to rise again. Okay, and after breaking that key support area, it started to fall again. Okay, without any indicators, we are getting clear confirmations with the help of price action. Okay, next fresh example we have, another one is Fortis. Okay, in Fortis
you can observe that this is the key supply area. So एक ये area पे आने का काफी लंबा सा wick बन रहा है. So now one thing I need to make sure, if you observe that there is the very long wick here. So this is called rejection of the area. Okay. So we had observed at this point also, okay. 3 बार ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पर और एक यहाँ पर. So ideally it is rejecting this area and उसके बाद वो fall हो रहा है continuously. Okay. यहाँ पर ये आया, fall हुआ, वापस उसने कोशिश किया ये लेवल ब्रेक करने को, but fall हुआ. Now वापस ये ट्राई कर रहा है, again it is trying to break this level. Okay, so this is very fresh example. We have one rising trend line here. So the area, if you check the area, it is getting shrink. Okay, area shrink हो रहा है, chances बढ़ रहे हैं breakout के. So once it breaks the 303 level, there are very good chances for the long break. In this sense, the closing should sustain above 303. Okay, so once it sustains above 303, then this is the very good buy call for Fortis. Okay. Next thing is demand and supply zone, which is also called support and resistance. Demand and supply are very important and easy to observe. The top area where price reach at one zone and fall is called resistance zone or supply zone and vice versa. Okay, इसके भी कुछ एरिया ये एग्जांपल्स है जो मैं शेयर करता हूँ. सेल में हम लोग ने वीकली में ऑब्जर्व किया था. इफ यू चेक, आई विल चेक ऑन मंथली चार्ट. ओके, सो मंथली चार्ट में अगर आप ऑब्जर्व करोगे, एक ये एरिया ऐसा था जहां पर रिजेक्शन बहुत बार देखने मिला था. सो एग्जैक्टली व्हाट आई मीन टू से इज दिस एरिया इज कॉल्ड रेजिस्टेंस जोन और एल्स यू कैन आल्सो कॉल दिस एरिया एज सप्लाई जोन. सो ये एक जोन ऐसा था कि जोन से ऊपर ही नहीं जा रहा था. It tried to break here, but it couldn't. Okay, it fell here again. After that, it tried one more time, but it fell again. Okay. Later, it tried to break. 91 एक की resistance था. Break करने के बाद direct उसने high बना था 149. Okay, so if we check on weekly chart, ये हमारा breakout point था. Okay, ये हमारा resistance है. ये हमारा breakout point था. 2 weeks के लिए काफी अच्छा सा buying हम लोग को दिया था. Now after that, if you observe on weekly chart, one clear down channel बन रहा है यहाँ पे. Okay, ideally अभी ये क्या चीज हो रहा है, अप ट्रेंड है, डाउन चैनल है, there are very high chances कि ऊपर ब्रेक कर सकता है, but we need to wait for the breakout. Okay, ऐसा भी हो सकता है कि ये यहाँ पर वापस कंटिन्यू करके 95 का वापस सपोर्ट ले ले, एंड आफ्टर रीचिंग दी सपोर्ट एरिया there are very high chances कि वो यहाँ से एक रिवर्सल दे दे. Okay, MCX में भी एक हमारा डिस्कशन है यहाँ पर. MCX में भी अगर देखें वीकली चार्ट, पूरा एक कंसोलिडेशन एरिया देखने को मिला. दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन एरिया. सो इफ यू चेक इन MCX, एक यहाँ पर एक लेवल ब्रेक किया था 1838. सो 1838 लेवल ब्रेक करने के बाद उसने हाई बना था 2144 का. ओके, 2 वीक्स का पोजीशन था. 2 वीक्स का पोजीशन में काफी अच्छा सा रिटर्न दे दिया था उसने. ओके, ओके, BPCL का भी एक हमको यहाँ पर आया था डेली में. ओके, नाउ हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी ऑब्जर्व करना इजी है. मैंने कैसे ऑब्जर्व किया है ये, इफ यू चेक हियर, दिस इज द शोल्डर. ओके, एक ये शोल्डर है, एक ये हमारा हेड बनता है यहाँ पर, एंड दिस इज द शोल्डर अगेन. सो वंस इट ब्रोक द की सपोर्ट एरिया, ओके, दिस इज माय की सपोर्ट एरिया 407. सो वंस इट ब्रोक द 407, दैट इज माय शॉर्ट अपॉर्चुनिटी. नीचे आया, वो एरिया को रीटेस्ट किया. सो कमिंग अप फ्रॉम द लेवल, दिस इज कॉल्ड रीटेस्टिंग. ओके, रीटेस्ट किया और वापस से उसने कंटिन्यू किया ट्रेंड. ओके, so this is how we can observe head and shoulder pattern as well.
last two things in our strategy is retracement tool and index comparison. Okay. Now what is retracement tool? So in retracement tool, the Fibonacci retracement is drawn on a chart from a low to high in uptrend, or else you can check on high to low for the downtrend. It indicates area where the price could pull back to. एक ये की लेवल्स है, हमारे की रिट्रेसमेंट लेवल्स है जो है 50 एंड 61. ये 50 एंड 61 एक ऐसा गोल्डन लेवल है जहां से हमको एक रिवर्सल काफी अच्छा मिलता है. Okay, so if you check on 61 level, 61.8, there was very one good reversal area here. So after this reversal area, it started to go down. Okay. We'll check this on chart as well. It is very easy to add this. We have example in India Cement. Okay. I just have to press R for retracement, and after adding the tool, you can see that these are our Fibo levels. You can note down this level. You can take screenshot right now if required, because these are the very important key levels. Okay. ये लेवल्स कुछ ऐसे हैं जहां से हम लोग को रिवर्सल काफी अच्छे मिलते हैं. So to add this retracement levels, press R button. After pressing R button, you will get this window. You just have to click on OK. After that, select the low area and select the high area. Okay. So it will automatically add the retracement here. So if you check on India Cement, it retraced till 78.6 level. Okay. And after retracing this point, it is coming up. Right now, if you check, it is taking the resistance of 50%. This is the 50%. It is taking the resistance of this 50% right now. Okay, so once it breaks this 50% also, it will give good movement till 38.2%. Okay. So एक ये retracement tool ऐसा है जिससे हमको reversal patterns easily मिलेंगे. Okay. And last thing we have is index comparison. Comparing stock if it is overvalued or undervalued along with its base index. This leads to perfect technical overview. Okay. Now why we need to compare? Compare करने से क्या मिलेगा? It is very clear thing. We'll compare this stock with its base index. मतलब क्या करेंगे? हमारे पास एक ऑप्शन है. If you go on chart, we have this comparative chart, daily comparative chart. Okay. So what this actually says, we can compare two stocks at the same time or more than two. I just have to select the first script here. So for example, I have selected Nifty Pharma here. Okay. We'll take examples of pharma scripts. So I'll just take Nifty Pharma index. And in second, we have two options. We can select second stock or else we can select whole group as well. So to select whole group, I have to click on select group. So in select group, I'll select Nifty Pharma. Okay. So after selecting Nifty Pharma, I need to select the date range. So एक पूरा range लिया है हम लोग ने previous year का. Okay. And after that, we need to check match first values. Yes. इसका मतलब क्या होता है? ये जो 100 level दिख रहा है यहाँ पर, ये 100 level एक base value बना देगा वो. Okay. So I'll just have to click on draw first versus second. Okay. So as you can see, the white line is Nifty Pharma and the blue line is About India. Okay. So एक clear comparison मिल रहा है previous year का. Nifty Pharma के ऊपर About India. About India is leading the Nifty Pharma. So this means that About India is not undervalued right now. About India overvalued है, index के ऊपर चल रहा है. Means ये काफी अच्छा performance दे रहा है. It started to give good performance since this area, since July. Okay, July के बाद काफी अच्छा सा uptrend देखने मिला था. You can also click on that draw first versus second again. So it will change the script. Okay. एक Oro Pharma है. Oro Pharma अगर आप देखोगे
सो निफ्टी फार्मा का जो लाइन है, निफ्टी फार्मा के लाइन से काफी नीचे चल रहा है. सो दिस इज वेरी अंडर वैल्यूड राइट नाउ. ओके, सो वी हैव वेरी क्लियर व्यू फॉर Oro Pharma that there are very good chances for Oro Pharma right now to recover. Okay, Oro Pharma का हम लोग चार्ट देख लेंगे, उसका एक क्लियर व्यू ले लेंगे. अगर हम लोग को बाइंग लगता है तो that will be very good option to buy because it is underperforming Nifty Pharma index. Okay, so this is how you can check the comparisons. Why this comparison is very necessary? Because आप आपका इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट करते हो. इफ यू आर सिलेक्टिंग योर इन्वेस्टमेंट और पर्टिकुलर स्टॉक फॉर ट्रेडिंग, so this is very important to compare with its base index. सीधी सी बात है, if we are investing in anything or if we are trading on any particular stock, we check many confirmations before we take trades or investments. So this is the very good option to compare with base index. And if you check it is undervalued or overvalued, you can select your trades or investments accordingly. Okay, so this is all about the price action analysis. I hope it was very informative session for you. You can also if you have any doubts or anything you would like to share with us, or if you want to discuss anything, you can directly contact us on 35018383. We have 2 WhatsApp numbers. These are our WhatsApp numbers. You can directly contact us on WhatsApp as well. Okay, thank you everyone. Thank you for joining.